Hello everybody, welcome to you all in ACS 4 Rawat Bhata, and this is a practical session, and myself Govind Sharma, PGT Physics in ACS 4 Rawat Bhata, welcome you all. And students, today I am here with an experiment which is in your AISSC board exams, practical exams, class 12th, and the experiment is to compare EMF of two primary cells using potentiometer. To compare EMF of two primary cells using potentiometer means with the use of potentiometer we will compare the EMF of two primary cells. Students, as you know that EMF of any cell we can define as the potential difference across the terminals of cell when it is in open circuit. Means when the cell is not giving any current, then the potential difference across the ends of the cell is called as EMF of the cell, or EMF full name is electromotive force. So we have got two primary cells. The one is Lagrange cell and another one is Daniell cell. And now we will compare. Compare means we will find the ratio of these two cell EMF with the help of potentiometer. So as you know that in current electricity chapter, the potentiometer is there in your theory syllabus also. Potentiometer is a sensitive instrument, electrical instrument, which measures the EMF and potential difference with the most accuracy without any error. Why it does so? Because it does not gain any current from the circuit in balanced condition. Means, as you know that the potentiometer works on the principle of null deflection. Means we compare the EMF of any cell with the EMF of any standard driver cell, and where the EMF of any cell or potential difference in open circuit we can define balances the potential difference of driver cell, then we say that this point is called as the balance point. And in this balance point condition we can say that the potential difference across the 2 points is proportional to the length of that part, means proportional to length, and by this we can get the formula E1 upon E2 equals to L1 upon L2. Means what we are going to do this in experiment, we will measure the two balance length, one L1 when the first cell will be connected in the potentiometer circuit, then the balance length L2 when the second cell will be connected in the circuit. Means the two cells are in the parallel combination, and then we will connect these cells one by one. Student, have a look on this circuit diagram, then you can understand it better way. Now, as you know that this is the potentiometer wire, and generally we take 10 meter wire, okay? Then this is the A point and this is the B point. Now this A point is connected to the battery or driver cell positive terminal. Now you see student, this is the standard circuit, or this is called as the primary circuit of potentiometer. Now this A point is connected to the positive of driver cell. Driver cell means battery, okay? Then negative is connected to the key, and this key is connected to the rheostat. Rheostat means we can change the current. Now the rheostat is connected to the another point B on the potentiometer wire. Now this is called as the primary circuit, and this is the standard circuit. अब क्या है? Now we have got the two primary cell. In experiment we will take the two cell. One is Lagrange cell and another one is Daniell cell. Students, Lagrange cell I will show you after some time, and Daniell cell how it looks I will show you. Lagrange cell and Daniell cell, the positive terminal of both the cell we connect with the A point
where driver cell positive terminal is already connected. This is very important thing, students. Whenever we arrange the circuit diagram of potentiometer, always remember the A point where we have connected to the positive terminal of driver cell or battery. At the same point, we connect the positive terminal of other cells. We connect the positive terminal of other cell in secondary circuit. This is called as the secondary circuit. So what we do? We connect the positive of Lagrange cell to the A point and positive of Daniell cell is A point. Here E1 means Lagrange cell and E2 is Daniell cell. Okay. Now you can see negative of both the cell connected to the X and Z terminal of two-way key. There is a two-way key. I will show you after some time. And there is a middle terminal in two-way key. We connect to the galvanometer and galvanometer to the jockey. So students, I will show you each and every apparatus or circuit instrument after few minutes. First we consider the explanation. First we explain the experiment and then I will show you how we proceed. So this is already we have discussed the formula. Okay. Now what we do, when we put the key between XY, only first cell E1, Lagrange cell will be connected in the circuit and the second cell will be disconnected in the circuit. Okay. Now what I do, when I remove the key from XY and I insert the key between YZ, then what happens? The second cell connect in the circuit and the first cell get disconnected. Okay. Now the observation table. Observation table is very important in any experiment. Okay, student. So in observation table, we draw like this. First point, balance length L1 when E1 EMF cell is connected in the circuit and the balance length we are making in centimeter. Then second, balance length L2 when E2 EMF cell is connected in the circuit and there is a simple readings I have written here for you. Actually in experiment we take the reading from the instrument and we write that reading. Here we have written some sample readings and I have done a calculation. Sample calculation is also done for you. E1 upon E2 equals to L1 upon L2 formula. It is the balance length ratio that is equal to the ratio of the EMF of two cells and we get the approx 1.73. There is no unit of ratio as we know that. So balance length is divided by balance length, that means we get the unit length 1.37 and when we see the standard ratio then we can get the 1.34. Student, Lagrange cell is considered as E1 here, I already told you, and EMF of Lagrange cell is 1.45 volt and the EMF of second cell Daniell cell is 1.08 volt. Then we take the ratio is approximately 1.34 and over sample readings result is coming 1.37. So we can get the our ratio is very near to the experimental or standard ratio. Okay. So this is all about the explanation of this experiment. Student, the most important thing of this experiment is draw the circuit diagram. You just see the circuit diagram very carefully. Once again I repeat the circuit diagram and then I will show you this circuit diagram in experiment in apparatus. I will show you the apparatus, how we connect the apparatus and how we take the reading. Let us once again I revise in the circuit diagram. There is a potentiometer wire, 10 meter wire. I have drawn a sample wire. There are 2 points A and B on the wire. A is connected to the positive or driver cell. Negative is connected to the key. Key is connected to the rheostat and rheostat is connected to the B point. This is called as the B point, primary circuit or standard circuit. Now, this is the secondary circuit. The E1 is Lagrange cell, E2 is Daniell cell we have considered here. The first cell and second cell both the positive terminal connected to the A point where the driver cell positive is connected. The negative of both the cell
is connected to the two-way key X and Z terminal, and the Y terminal is connected to the galvanometer, and galvanometer is connected to the jockey. I tell you about some galvanometer, something about galvanometer. Students, in galvanometer what happens? There is a zero terminal, zero reading in between, and at the left and right side there are some divisions. Generally we take 30 divisions or 60 divisions we can take also. Galvanometer is a sensitive device which detects the current in the circuit. It means it can detect the current and voltage in the circuit. So what happens when we put this jockey? How the jockey looks like, I will show you after some moment. The jockey is put at the A point. Then we see that the galvanometer deflection comes extreme at the left end. Then we put the jockey at the B point. Then the galvanometer deflection, pointer deflection come at the extreme right. Because the direction or the current changes at the both the points. Now we can see that if we slide the jockey on the wire, then this pointer will move like this, left to right, and at particular point the deflection comes 0, means the pointer will come at the 0 point. We stop on the wire and we mark that point on the wire, and this is our balance point. Means our balance point means galvanometer should not draw the current from the circuit. When galvanometer should not draw the current from the circuit, then the potential difference equal to the balance length is equal to the unknown EMF. This is the actually thing we understand in this experiment. So in this way, one by one we connect our two cells. First we connect our Leclancy cell E1 EMF, and we take the balance length L1. Then we connect the second cell E2. When we connect the second cell, then we disconnect the first cell. This remember this thing. And in this way, we connect again, find the balance length L2 for the second cell. Okay, and in this way we can get the ratio E1 upon E2 equals to L1 upon L2, and that will be the ratio of our EMF of two cells. So I hope that you have understood this circuit diagram very easily and carefully. You have to draw in lab. Now I will show you the practical part, experiment part. How we connect, how we draw the circuit, how we connect the circuit, and how we take the readings. Just I will show you. Okay, and this is all about your practical record work also. In your practical record work, you have to follow the same step. Aim, apparatus. Now I will show you. I have not written here apparatus because I will show you. Then theory or formula, then circuit diagram, then observation table, then calculation, and then result. In the last we write the result. Result means what we obtain, the ratio of the EMF of two primary cells using potentiometer, and in the very last we write the precautions. What the precautions we have to take while doing the experiment. So let us now we go to the experiment part. So now we discuss to the experiment part. Student, this is और बैटरी ड्राइवर सेल, जो भी मैंने ड्राइवर सेल बताया था आपको प्राइमरी सर्किट में, ये ड्राइवर सेल है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ड्राइवर सेल के रूप में दो 1.5 के सेल्स है, तो टोटल हमने यहाँ पे 3 वोल्ट ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे हम बैटरी की जगह बेसिकली ड्राइव सेल को एज हम ड्राइवर सेल की तरह यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्लांसी सेल, फर्स्ट सेल, दिस इज कॉल्ड E1। ओके, इसको हमने जो E1 बोला था अभी, ये हमारा लेक्लांसी सेल है। लेक्लांसी सेल के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा कंटेनर है, ग्लास कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर हम लेते हैं। इसके अंदर जो है वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सॉल्यूशन हम रखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ये हमारी कार्बन रॉड होती है इसके अंदर, ठीक है। कार्बन रॉड इसमें से पूरी थोड़ी अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड का ये पेस्ट है इसके अंदर, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस सेल का। और ये हमारी जिंक रॉड होती है, जिंक रॉड हमारी नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करती है। इसी तरह से ये हमारा जो दूसरा सेल है जिसको हमने E2 बोला है, ये हमारा डेनियल सेल है। इस डेनियल सेल के अंदर हमारा डाइल्यूट H2SO4 है। ये डाइल्यूट H2SO4 हमारा क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसमें भी हमारा जो जिंक रॉड है दैट इज़ द बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल, और दिस कॉपर कंटेनर इज इटसेल्फ ए पॉजिटिव टर्मिनल। ओके,
और इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहा है, दैट इज द डी वो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है, डीपोलराइजर की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये हमारा रियोस्टेट है। प्राइमरी सर्किट में मैंने भी आपको रियोस्टेट दिखाया था, ये रियोस्टेट है, ठीक है, इससे हम करंट की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। ये प्राइमरी सर्किट में जो की लग रही थी, ये इस तरह की की होती है स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन सी दिस इज द की इन प्राइमरी सर्किट, ओके, दिस इज द सिंगल वे की हमने प्राइमरी सर्किट में लगाई थी। और नाउ स्टूडेंट दिस इज द टू वे की। नाउ यू सी दिस टू वे की लुक्स लाइक्स, हाउ इट लुक्स लाइक्स। इसमें बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं और 2 कनेक्शंस हम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। और इस टू वे की में ये X, ये Y और ये Z, ओके। और ये हमारा गैलोरोमीटर, और ये गैलोरोमीटर का एक एंड और ये दूसरा एंड, और ये जॉकी होती है स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको बताया था, जॉकी को वायर पे स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, दिस इज अवर जॉकी। और स्टूडेंट दिस इज अवर पोटेंशियोमीटर सेटअप, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, जिसके अंदर एक वुडन बॉक्स आपको दिख रहा है। ये हमारे 1 मीटर के 10 वायर से 1 मीटर लेंथ के 10 टर्न्स में हमने इसको लपेटा है, एक ही वायर है ये, तो टोटल लेंथ हमारी हो गई 10 मीटर। और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यहाँ पे 2 कनेक्शंस आप कर सकते हैं। तो इस तरह का सेटअप आपको लैब में मिलता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम देख लेते हैं फटाफट से सर्किट अरेंजमेंट। ये देखिए, ये हमारा ड्राइवर सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने, ये मेरे कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू मैंने किससे जोड़ दिया है, A पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। फिर ड्राइवर सेल का नेगेटिव गया मेरा सिंगल वे की पे। अब आप अपने माइंड में वो सर्किट डायग्राम जो मैंने बताया था उसको रखिए, ठीक है। और की का सेकंड पॉइंट हमारा बेसिकली रियोस्टेट से गया, और रियोस्टेट का सेकंड पॉइंट हमारा बेसिकली इसके B पॉइंट पे। तो ये हमारा इधर का क्या बन गया, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया। रियोस्टेट में एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको एक टर्मिनल जो है वो नीचे कनेक्ट करना है, एक आपको उसके ऊपर पे कनेक्ट करना है। दोनों टर्मिनल, इस पे नीचे भी एक टर्मिनल है, दोनों आपको नीचे टर्मिनल्स पे कनेक्शन नहीं देना है, क्योंकि इसको हम बेसिकली करंट कंट्रोल कर रहे हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह हमारा बेसिकली काम आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसके दोनों टर्मिनल्स, एक ऊपर और एक नीचे, तो करंट इसमें हमारी एक टर्न से फ्लो के सेकेंड टर्न में यहाँ पे निकलती है, ओके। तो दिस इज अवर रियोस्टेट। तो अब हमारा सेकेंडरी सर्किट में ये हमारा लेक्लांसी सेल है, और लेक्लांसी सेल में आप देखिए ये कार्बन डॉट पॉजिटिव टर्मिनल, दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द A पॉइंट वेयर ऑलरेडी द पॉजिटिव और ड्राइवर सेल इज कमिंग। नाउ यू कैन सी हियर, ओके। नाउ हियर आल्सो द पॉजिटिव ऑफ Daniell cell is copper container itself. This copper container itself is a positive terminal of Daniell cell. It is also connected at the A point. तो जैसा मैंने आपको भी थ्योरेटिकली सर्किट डायग्राम बताया था, वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ओके। एंड द नेगेटिव ऑफ, नाउ यू सी दिस टू वे की, दिस टू वे की। नाउ द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल E1, Lake-Lancy cell is connected to the X terminal, then middle terminal Y is connected to the galvanometer, and the Z is connected to the negative जिंक रॉड ऑफ Daniell cell। मतलब दोनों ही सेल में जिंक रॉड आपका कॉमन है, नेगेटिव टर्मिनल होगी। तो आई थिंक दिस सर्किट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने क्या किया, ये सिंगल वे की में हमने डॉट को लगाया, तो हमारा जो प्राइमरी सर्किट है वो क्या हो गया, ऑन हो गया। अभी हमारा प्राइमरी सर्किट में करंट हमारा स्टार्ट हो गया फ्लो होना। अब हम सबसे पहले आप देखिए ये हमारी टू वे की में सबसे पहले हम लेक-लांसी सेल जिसको हमने E1 माना है उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो लेक-लांसी सेल को हमने ये कनेक्शन दे दिया, इसको मैं थोड़ा और टाइट कर देता हूँ इस तरह से। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने लेक-लांसी सेल को ये कनेक्शन दे दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लेक-लांसी सेल, अब हमारा देखिए लेक-लांसी सेल कनेक्ट हो गया है और Daniell सेल इज स्टिल डिसकनेक्टेड। Daniell सेल अभी हमारा कनेक्ट नहीं है, तो हमारा जो भी बैलेंस लेंथ आएगा वो लेक-लांसी सेल की ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, Daniell सेल की ईएमएफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखिए हम अब ये हमारा देखिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेना है तो है हमको कि हमारा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में अपोजिट आना चाहिए जब हम जॉकी को A और B पे रखते हैं। तो व्हेन वी पुट द जॉकी ऑन A एंड B, तो लाइक दिस, नाउ यू कैन सी, yes, now you can see students, when we put the jockey at the A point, the deflection is right hand side. Now we put the jockey at the B point, then the deflection comes in the extreme left. Now we can see the deflection is coming in the mutually opposite direction. Okay, so now we take the zero deflection. Now
you see, now we find the null deflection point. Now you can see I am finding the balance length, student, for you. Now you see, now you can see the pointer is deflecting. Okay, so deflection is coming in the pointer. So in this way we have to find the so student, now you can see, yes, so this is the zero deflection we already get on the wire. So now this balance length we calculate. Here scale is arranged, here is already scale is arranged, here we get the, now you can see ये हमारा जीरो डिफ्लेक्शन आ गया और ये जीरो डिफ्लेक्शन हमारा बेसिकली वायर पे बैलेंस लेंथ है सेल फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेल के लिए. ओके, दिस इज द बैलेंस लेंथ फॉर द फर्स्ट सेल. ओके, नाउ if this balance length is multiplied with the potential gradient K, then it will give the first cell EMF E1 equals to KL1. Now the same way what we do, we put the key between now YZ, means now I remove the key from XY, this XYZ, now XY, and insert the key between YZ. Now I connected the Daniell cell in the circuit, students. Now you can see the Daniell cell is connected in the circuit. Now the same procedure is there. Now again we check the deflection is coming opposite side and we find the zero deflection as we earlier found for the, now you can see this pointer. Okay, now you can see this zero deflection is coming, this zero deflection is already coming. So this is the basically method, procedure. So now we find the balance length L2. So in this way we can find the balance length L1 by inserting the key between XY, and the balance length L2 by inserting the key between YZ. Now you are required to take at least 5 readings, 5 measurements, 5 observations in this experiment. How we change our observation? एक बार हमने रीडिंग ले लिया, फर्स्ट रीडिंग वी हैव टेकन. नाउ यू सी दिस रियोस्टेट, वी जस्ट स्लाइटली चेंज द पोजीशन ऑफ दिस jockey on the rheostat. This is the jockey of rheostat. So when we start the or shift the slightly jockey, then our readings of L1 L2 will change. Okay, so accordingly K will also change. So but ratio will remain same. So we take the balance length L1 L2 in the 5 readings we take. Okay students, so now we take these 5 readings. And here however I have taken the observation table of one reading for your sample calculation. Here I have shown the sample readings and sample calculation. But now you are required, you have understood how to take the reading. So I hope that in this experiment now you can perform in your laboratory. This is very simple experiment. The main problem of this experiment is the deflection comes sometimes single sided. So you must know that what are the possible regions that the deflection may come in the single side. Single side means when you will put the jockey on A and B point, then the deflection will come on the one side only. This is wrong. This should not be there. We always arrange the circuit in such a way that our balance point should be obtained, our deflection should be obtained on the extreme left and extreme right of the galvanometer. So actually first you check the circuit diagram. Sometimes the connection is wrong, may be wrong. So you check the connection. Sometimes the connection may be wrong and sometimes the loose connections may be there. कि आपका जो कनेक्शन है वो कई बार टाइट नहीं होता, तो उससे हमारा जो करंट वो फ्लो नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, तो उससे हमारा डिफ्लेक्शन कई बार अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ पाता है. और कई बार हमारा जो सेल ड्राइवर सेल है उसका EMF लेक्लांसी और ये डेनियल सेल से कम चला जाएगा, ये डाउन हो जाएगा बैटरी प्राइमरी सर्किट का, तो भी हमारा डिफ्लेक्शन वन साइडेड आएगा. तो हमारा प्राइमरी सर्किट का बैटरी हमेशा फ्रेश होना चाहिए, मतलब एकदम प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और हमारी जो डेनियल सेल लेक्लांसी सेल है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमको लेनी चाहिए. और इसमें हमारा जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि द जॉकी हमें टाइटली वायर पे ऐसे रगड़ना, रब नहीं करना है. उससे क्या होगा, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है और उससे वायर की रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड वायर बोला है. ये जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, इट इज़ मेड ऑफ द
एलॉय, मैग्नन और कॉन्स्टेंटन एलॉय के बने होते हैं. वाई? बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी लेस, सो their temperature, their resistivity almost remain constant with the temperature. So student, I hope that this experiment is clear in your mind, how we proceed or how we understand this experiment, how we do this experiment in your lab. And the theoretical part already I have covered. So student, I hope that this experiment you can do now your own whenever you will have the chance to do in your laboratory. So with this I end this session of practical class. I hope that you have enjoyed this session, and if any doubt you can ask me, okay, on my mail ID also, or my school mail ID you can also ask, okay. So with this I end my session. Thank you very much.